જે પ્રકારનો વરસાદ રાજ્યમાં છે તે વરસાદે તો સુરતની સુરત પણ બદલી કાઢી છે। જી હા, સુરતમાં પણ અનેક વિસ્તારો જળબંબાકાર થઈ ગયા છે। ખાસ તો સુરતના ડુંભાલ વિસ્તારમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે। ડુંભાલ ફાયર સ્ટેશન પાસે ઘૂંટણસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને લોકોને રેસ્ક્યુ કરતા ફાયર જવાનોની ઓફિસમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે। તમામ ફાયર સ્ટેશનમાં પાણી ભરાઈ જવાના કારણે हाल तो हालाकीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। जोई शको छो घूंटणसमा पाणी डुंभाल विस्तारनी खाड़ीपुरथी भराया छे पाणी। तंत्र सतत प्रयत्नशील छे आ झड़पी निकाल माटे। कुंभाल फायर स्टेशन पाटे घूंटणसमा पाणी भराई गया। लोकोने रेस्क्यू करता फायर जवानोनी ऑफिसमां पाणी भराई गया अने फायर स्टेशन पहोंचवा माटे घूंटणसमा पाणी नड्या छे। छेल्ला 3 दिवसथी खाड़ीपुરના पाणी यथावत छे। सूरत में वरसाद ओछो पड़्यो, परंतु उपरवास में पड़ेला वरसादने कारणे शहर में जो खाड़ीपुर आव्या था ते खाड़ीपुरनुं हजी सुधी कोई निराकरण थयुं नथी। आज त्रीजो दिवस है खाड़ीपुरनो, तेम छतां पण हजू अहींया घूंटणसमा पाणी भर्या छे। अत्यारे TV30 नी टीम पहोंची छे डुंभाल विस्तारमां। अत्यारे डुंभाल फायर स्टेशन जे विस्तार छे ते आखुं फायर स्टेशनमां पाणी भरायुं छे। महत्वनी वात छे के फायरना जवानो जे छे के आ जवानो शहरमां एवी जग्याए जाय छे के ज्यां लोकोना घरोमां पाणी घुस्या होय અને ત્યાંથી પાણી કાઢવામાં અથવા તો લોકોને રેસ્ક્યુ કરવામાં ખૂબ મદદરૂપ થાય છે। પરંતુ અહીંયા તો તેમને જ રેસ્ક્યુ કરવાની જરૂર પડે છે, કારણ કે સુરતનું આ ડુંભાલ ફાયર સ્ટેશન જે છે તેમાં આ રીતે આખું તળાવ બની ચૂક્યું છે અને ફાયર સ્ટેશનમાં આવતા પહેલાં જ તમારે ઘૂંટણસમા પાણીનો સામનો કરવો પડે છે અને તેના જ કારણે અત્યારનો જે હાલત જોવા મળે છે તે ખૂબ જ गंभीर कही शकाय, कारण के आसपासना खाड़ी विस्तारों जे छे त्यां दुकानोनी अंदर पण पाणी घुसी चूक्युं छे अने तेना ज कारणे फायर ऑफिसरो जे छे ते अहींया आववा माटे ने घूंटणसमा पाणीनो सामनो करवो पड़े छे। त्यारे फायर अधिकारी जे छे मनोज भाई तेमनी साथे वात करीशुं के जे प्रकारे अहींया जे कामगीरी छे ते कई रीते करवामां आवे छे, अत्यारे जे पाणी भर्या छे तेने लईने शुं कीधुं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे पानी भर चुका है, कहीं ना कहीं फायर के जवान जो है वो लोगों को बचाते हैं, लेकिन यहाँ तो फायर स्टेशन में ही पानी घुस। हाँ, फायर स्टेशन पे पानी एक गटर का फुट, जब मीठी खाड़ी का लेवल 8.5 फुट हो जाता है तब गटर का पानी बैक मार देता है। तो जो सिटी का गटर का पानी, कहने का मतलब ये नीचाल वाला भाग है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। कितने दिन हो चुके हैं सर जी यहाँ पे पानी भरा? आज 3 दिन है। 3 दिन से यही परिस्थिति है यहाँ पे, 3 दिन हो गए। अभी आसपास में कई कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे अभी भी पानी भरा है? 3 दिन अभी यही यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ के जो कि खाड़ी के बगल में है, खाड़ी अभी पानी नहीं ले रही, धीरे धीरे डाउन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। खाड़ी का लेवल जैसे 8.5 फुट होगा वैसे पानी खींचना चालू कर देगा। बिल्कुल जी, हजी ए प्रकारे खाड़ीना लेवल है अत्यारे जोई शकाय छे खाड़ीनुं लेवल वध्युं छे ने तेना ज कारणे अत्यारे शहेरमां जे प्रकारे डुंभाल विस्तार छे तेना मुख्य मार्ग पर आ प्रकारे पाणी आवी चूक्युं छे। डुंभालमां अनेक विस्तारो छे के ज्यां लोकोना घरोमां पण पाणी घुसी चूक्या हता ने अत्यारे हाल डुंभाल फायर स्टेशन विस्तारमां ऊभा छीए अने त्यां जे प्रकारे हाल जोई शकाय छे के फायर विभाग जे छे त्यां अंदर सुधी जे पाणी छे ते पाणी घुसी चूक्या हता ने अत्यारे पण जे प्रकारे आ जोई शकाय छे के आ जे आगळनो पाणीनो भाग जे छे ते पण आगळ આવ્યો હતો ને તેના જ કારણે આ ફાયરના જવાનો જે છે ખૂબ જ હાલાકી ભોગવવી પડી હતી, કારણ કે તેમને પોતાના કામ અર્થે અહીંયા આવવાનું થતું હોય છે, પરંતુ લોકોના જીવ બચાવવા માટે તે અત્યારે સુરત શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફરી રહ્યા છે। પરંતુ હાલમાં તો તેમનું જે રહેણાંક વિસ્તાર કહી શકાય કે જે કામનું સ્ટેશન કહી શકાય ત્યાં પાણી ભર્યા છે। એટલે એકંદરે હજુ પણ ખાડીપુરનું કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી। તંત્ર કામે લાગ્યું છે, પરંતુ પાણી છે તે ઘટવાનું નામ નથી લેતું। ત્યારે હવે આ પાણી ક્યારે ઉતરશે તે એક મોટો સવાલ છે। कैमरामैन जसमिस्त्री साथ दिवेश परमार, TV30 सूरत।